डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मोमेंटम क्या होता है, राइट। तो मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, राइट। तो इसको और आसान भाषा में समझेंगे कि मोमेंटम बेसिकली पी से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने इसके ऊपर एरो लगाया है तो इट मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इसमें हमारे पास मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के प्रोडक्ट से मोमेंटम वेक्टर हो गया है, राइट। अब ध्यान से समझेंगे कि इसमें एक वर्ड आता है लीनियर। तो लीनियर बेसिकली वर्ड तब इस्तेमाल होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, राइट। तो हम बोलते हैं कि लीनियर मोशन हो रहा है, राइट। सो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो एनी ऑब्जेक्ट हुज मास इज m एंड वेलोसिटी इज v, उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट प्रोडक्ट बिकम्स द लीनियर मोमेंटम इफ मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो अब इसमें ये समझेंगे कि v हमारा वेक्टर है तो इसलिए हमारा मोमेंटम भी वेक्टर है। अगर इस मोमेंटम में देखो इस तरफ प्लस साइन है तो इसका मतलब अगर v जिस डायरेक्शन में होगा p का डायरेक्शन भी वही होगा। और अगर हमारे पास p ऐसे लिखें जिसमें नेगेटिव साइन भी हो तो इसका मतलब अगर v इस तरफ है तो जो मोमेंटम होगा वो इस तरफ होगा, या अगर वेलोसिटी इस तरफ होगा तो जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो उसके ऑपोजिट होगी। तो एक सिंपल सी बात है, ये प्लस साइन डिसाइड करेगा कि मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के किस तरफ होगा, राइट। तो हमें अब पता चला कि जो मोमेंटम है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी है और यहाँ पर जो प्लस साइन है ये बताएगा कि वेलोसिटी एंड मोमेंटम हैज़ ईदर द सेम डायरेक्शन और दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ प्लस साइन देन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इफ नेगेटिव साइन देन वेलोसिटी एंड मोमेंटम आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बात करते हैं इनके यूनिट्स की, राइट। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है। तो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोग्राम 1 मीटर ओवर 1 सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो ये बन जाएगा यूनिट ऑफ मोमेंटम, राइट। तो मेरे पास यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है, 1 किलोग्राम 1 मीटर ओवर सेकेंड 1 सेकेंड। तो ये बन जाएंगे मेरे SI यूनिट्स। और CGS सिस्टम यूनिट में जाना है तो ये बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, राइट। अगर मोमेंटम इफ P इज कांस्टेंट या हम कहें कि कंजर्व्ड है, राइट, देन इन दैट केस मोमेंटम 1 is equal to momentum 2 which is equal to constant. Now let's understand this concept. Now if I have two objects, right, body A and body B. So body A has mass m1 and its velocity is v1. Object B has mass m2, velocity v2. So what will be the linear momentum of A? Since both are moving in a straight line, I can write m1 v1 and for B I can write m2 v2. If I say the momentum of both are same, that is if PA equal to PB, then m1 v1 is equal to m2 v2 or v1 over v2 is equal to m2 over
m1, right? So if v1 is greater than v2, then m1 has to be less than m2, right? So this is how. So if v1 is greater, m1 has to be smaller, as both are obeying inverse relation. Let's see how. As momentum is equal to mass into velocity and is constant, then this mass is inversely proportional to the velocity. As v increases, m decreases, or vice versa, right? So this was all about linear momentum. So if you have any doubt, you can post a message so that we can clarify it. So let's talk about the dimension now. So momentum is mass into velocity. We write mass as m, and velocity is lt minus 1, because velocity is displacement over time, and this displacement is measured in length L, time in t. So this will become lt minus 1. So we are putting this value here, so we'll get dimension as m1 l1 t minus 1. So this is the dimension of momentum. So this topic is over. Now we will move to the new topic, that is Newton's second law of motion. Now in the Newton's second law of motion, so what Newton said, that force is directly proportional to rate of change of momentum, right? So what is force? So in Newton's second law of motion, Newton says force is directly proportional to rate of change of momentum, right? Since momentum is vector, force is also a vector quantity, also vector, right? So what is Newton's second law? A rate of change of momentum is directly proportional to external force applied, right? So let us understand this now, this concept. So force is directly proportional to a rate of change of momentum, right? So F is proportional to dP by dt. And what is dP? It is actually P2 minus P1 over change in time T2 minus T1, right? So when you remove this proportionality sign, I can write K dP upon dt, right? And in SI system, this K is 1 in SI units, right? So we have a relation F is equal to dP over dt. As P is equal to mass into velocity, I will substitute this value here. So this F is equal to d by dt, mass into velocity. So you know how to take the derivatives. So first I will take the derivative of velocity and keeping mass as a constant,
This is first function, this is second function, and next time I can take velocity outside and variation of mass. Now if m is constant, then dm by dt is 0, but in case of rocket propulsion, this term dm by dt is not 0, right? So we are not talking in the normal case, but in case of rocket propulsion, only in that case dm by dt is not equal to 0, right? Then we have to consider the change in mass of the rocket, because as the rocket goes up it loses its mass, so there is a variation in mass. But if mass is constant, then there is no variation, and then I can put this term equal to 0. So what will be our force then? It will be m dv by dt, and we know from here that change in velocity over time is actually this term v2 minus v1 over t2 minus t1, and all of us we know that this is acceleration, right? So F is equal to mass into acceleration. This is our Newton second law of motion, right? तो अब आपको पता चल गया होगा कि हाउ वी कैन डराइव दिस. नाउ मूविंग अहेड, अब अगर आप ध्यान से देखें, F is equal to ma, so there is a positive sign here, right? It means if A acts in this direction, my force is also in the same direction. So if F is equal to minus ma, as m is scalar quantity, right, it means if acceleration is along this direction, my force acts in the opposite direction, or if A acts in this direction, my F will be in the opposite direction. So this negative sign decides direction of force. So this negative sign decides the direction of force, right? तो ये नेगेटिव साइन डिसाइड करेगा कि फोर्स का डायरेक्शन ए की तरफ है या ऑपोजिट है. अब अगर आगे देखें तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन अगर हम ऐसे लिख सकें इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और ए जेड के, तो ये मुझे बता रहा है, आई बता रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, जे बता रहा है अलोंग वाई एक्सिस, और के बता रहा है अलोंग जेड एक्सिस. तो मेरे पास तीन कंपोनेंट्स अगर आ जाएं तो मेरा जो फोर्स होगा वो क्या उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आई, एफ वाई जे और एफ जेड के. तो अगर आप इस तरफ ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें और ये वाला यहाँ पुट कर दें, तो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के, विच इज़ इक्वल टू मास ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के. तो मैं तीनों फोर्सेस के कंपोनेंट को इक्वेट करके लिख सकता हूँ. तो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स एम ए एक्स, एफ वाई एम ए वाई और एफ जेड एम ए जेड. तो आपके पास तीन कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलग अलग निकल आएंगे. तो आप सब में देखेंगे, सब में मास इनटू एक्सेलरेशन ही है, राइट? अब फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? मास हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं, राइट? तो कैसे
एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड, टाइम के होते हैं सेकेंड। तो ए के यूनिट्स बन जाएंगे, तो हम यूनिट्स निकाल रहे हैं, तो मीटर ओवर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, ये बन जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अगर आप ये वैल्यूज़ देखें तो फोर्स के यूनिट हो जाएंगे 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर ओवर 1 सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ही हम बोल देते हैं 1 न्यूटन। तो न्यूटन ने फोर्स के यूनिट्स ऐसे डिस्क्राइब किए। तो एक न्यूटन किसके बराबर है? 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो what is 1 Newton? 1 Newton is the force, right, which produces acceleration of 1 meter per second square in by accelerating मास ऑफ 1 किलोग्राम। तो आप एक 1 किलोग्राम मास लें, उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराएं, तो जो फोर्स बनेगा वो बनेगा 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ये फोर्स बनेगा इसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन। तो ये मेरा 1 न्यूटन बन जाएगा।